सो गुड इवनिंग एंड नमस्ते एवरीवन। जैसे आप जानते हैं हम लोग पिछले कुछ दिनों से रोज नया नया सब्जेक्ट पे नए नए चैप्टर्स के ऊपर नए नए टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं। आज हम बात करने वाले इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवेयर इन इंटीरियर डिजाइनिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवेयर इन इंटीरियर डिजाइनिंग ये समझना क्यों जरूरी है, बिकॉज इंटीरियर डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट स्पेस प्लानिंग एंड व्हेन वी डू द स्पेस प्लानिंग तो डेफिनेटली फर्नीचर विल कम। तो जब फर्नीचर हम बनाते हैं तो फर्नीचर बनाने के टाइम पे हमको बहुत सारा हार्डवेयर को हमको यूज करना पड़ता है, बहुत सारा हार्डवेयर हमको लगता है। उसी चीज को समझने के लिए आज हमारे साथ में निकुंज सर हैं, निकुंज परिहार सर हैं आज हमारे साथ में, जो हमको आज हार्डवेयर के बारे में जानकारी देंगे। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हार्डवेयर एंड हाउ इट इज यूजफुल फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग विद निकुंज सर। Nikun sir is basically he is computer engineer और साथ में इन्होंने he has done his MBA also. He has around 6 years of experience in the industry. इसके पहले निकुंज सर सलीचे के पहले he has worked with Hatic and now he is assistant product manager in सलीचे। सलीचे के बारे में बताऊं तो सलीचे is basically इटालियन कंपनी। 1926 से सलीचे इटाली में हार्डवेयर बनाती है, फर्नीचर हार्डवेयर बनाती है। अगर हिंज की अगर बात करूं, जो आज अगर अपन हिंज देखते हैं जो फर्नीचर में यूज करते हैं, किचन में वार्डरोब में हम हिंज यूज करते हैं, तो 1957 में वर्ल्ड में सबसे पहला अगर ऑटो हिंज बनाया तो सलीचे ने बनाया था। फिर सलीचे ने लगभग 1950 से 1960 में यूरोप में काफी अच्छा बिजनेस डेवलप किया और 2020 से इंडिया में सलीचे स्टार्टेड बिजनेस इन इंडिया। तो निकुंज सर सलीचे के प्रोडक्ट मैनेजर हैं, असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर हैं, जो आज हमको फर्नीचर के बारे में और फर्नीचर पर लगने वाला हार्डवेयर के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देंगे। तो वेलकम निकुंज सर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। So now dice is yours, Nikunj sir. You can start your presentation and please we'll take all your questions after the presentation. आप अपने सवाल तैयार रखिए। निकुंज सर से जो भी सवाल आपको पूछने हैं इस सेशन के बाद में हम उनसे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं। Thank you, Nikunj sir, once again. Hello everyone and once again thank you Bharat sir यहाँ मुझे प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए and for to share my experience with everyone. So as sir said, like Salice के बारे में कि like from 1926 Salice has been solely manufacturer of hardware and again Salice has I would say 3 manufacturing units in Italy solely, and each and every product of Salice that you see is only made in Italy because they always want to have the quality in their product. And coming to the topic, the importance of hardware in furniture, as sir said, it is all about space management and हम कैसे हमारा फर्नीचर डिजाइन कर सकते हैं using different hardwares. So in interior designing if you see कि ब्यूटीफुली डिजाइन तो हर कोई कर लेगा, बट अगर हम स्पेसिफिक हार्डवेयर की बात करें तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम कौन सा चूज करें, कहाँ पे चूज करें एंड एवरीथिंग। सो आपने अगर डिजाइनिंग की होगी तो इफ यू सी इन द किचन सेक्शन कई बार कॉर्नर्स छूट जाता है। सो टू प्लान दोज वी हैव कॉर्नर यूनिट्स, लाइक वी सी कॉर्नर यूनिट्स एवरीवेयर टू पुट ऑन देयर एंड लेट्स हैव सम views of some kitchens. I'm sharing my screen with for the same. Okay, so is my screen visible to everyone? Yes sir. Yeah, so यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो there is a design of a kitchen. Here you see many elements like drawers, and if you see there are overhead units as well. So here this whole game is of space planning. Here if you see there are multiple drawers, some of larger width, some of a smaller width. Again there are one tall unit as well designed for more storage space to optimize the space and so that we can have more storage area. Again if you see here are different overhead units, all divided into 2 shutters. Some can be single shutters as well. Again there are different ways to design a drawer. So here if you see we have 3 drawers and one
we have an internal drawer to have more storage area, because इतनी height जो है हम एक बार में use कर नहीं पाते. So for having some cutleries for having some cutleries, you can use this internal storage areas as well. Again, if you see, we always have some of the space left when we go for designing a kitchen. A very minor space of, I would say, 150 mm, 300 mm, or 200 mm, or 250 mm. So for that space, you can always plan a, I would say, pull out unit, or I would say bottle pull out sort of a thing. It can be used anywhere. I would say it can be used in islands, it can be used in parallel kitchens, C-shaped kitchens, anywhere. Here are some of the views of the same. Again, as said, the space below the sink sometimes remains unused. So there are in market, there are also available different types of sink unit drawers as well. If you see over here, there is a sink unit drawer here on the left image, where you see two parallel spaces available to use, and in the middle there is an open area so that you can accommodate your sink at the place. Even there is one more type of sink unit where you can have a more usable area. Again, forward, drawers are the things which can be utilized anywhere. The one application that we saw, that is kitchens. Another applications that we see is the living area. You can plan it in the living area as well. You can plan it along with the bedside tables as well. Just a now let's see, if you see, here is also a kitchen section where they have beautifully planned the dado area, which is hidden under a shutter. And here the mechanism that is used that slides the shutter vertically down so that you can access this area, and in case if you want to hide those area, you can pull the shutter upwards. This particular sort of fitting can be used in multiple ways. Here you see, you can place the unit in the study area as well. So moving from kitchen units, we can also see some wardrobe areas as well. So here the design is beautiful. They have used glass shutters as well, the wooden shutters as well, some retro designed shutters as well. But the thing is to make them function properly. So all the credit goes to the hardware that is being used to make it run beautifully, functionally, and aesthetically. I also have some of the images of our office that can show the best usability of the products. So here is one of the unit. Here the white shutter that you see slides up so that you can have access to the stuff inside there. Here there is one design element hardware called pins, where you can have these bottles, you can have these shelves as well. Another design element here you see is a vanity unit that we have here. Here, if you see, the design is very sleek and aesthetically looking good. The brown shutter that you see that slides towards the right, so it's basically inline sliding for smaller cabinets. You can use it in vanities, you can use it in kitchen overheads as well. Again, here the glass unit that you see, so here are the hinge shutters with here are the hinged shutters which are opened, which can be opened. So here is one of the kitchen unit where you can see inline fitting in the middle with two glass shutters. There is an open space as well where you can access more, where you can make it open and you can access your more stuff. This is a type of, I would say, concept fitting जहाँ पे हम center का space अपने हिसाब से choose करके open रख सकते हैं
and left and right, and on the left and the right you can have a shutter of equal size. Here also, if you see, there is one more glass shutter installed. Here the glass shutter is installed in such a way that there are only two hinges, one at the top and one at the bottom. So when you open the shutter, आपको काफी sleek look मिलेगा, and you will see no hinges other than the two hinges at the top and the bottom. Again, if you see, this is a 3-door wardrobe. Glass, the front shutter is of a single piece glass, and there are very and again, if you want to divide this glass into two pieces, that can be done as well. Again, next, if you see, here are some of the hinges. So again, this hinge is a part of a hardware, but it makes the design of the I would say furniture look beautiful. You can have these hinges in many different colors. Here is one of the color. This is glossy chrome. Here, as per the design, you can have a gold color as well. If you have a vintage sort of a design in your furniture, you can have this old brass color as well, which gives you the vintage look. There are many different colors available for this hinge cover as per your requirement. Nikun sir, there is a Yeah. request from the student that can you go a little slow so they can see the product and they can understand. Okay. Done, sir. I think this might be they might be clear till now. Or if you want me to repeat anything, I can do that as well. Okay, you continue now. Okay, so here you see there is one more product. We name it Vector. So basically, the function of the product is to, I would say, flap down fitting. So this shutter closes upwards, and when you open the fitting, it opens downwards, and it opens in a soft opening manner. You don't have any banging or any sort of a sound or impact to the hard wooden cabinets. Again, if you see here, there are different colors of the covers available. Here, there's a dark finish. Here, if you see, matching with the shutter, there is a golden finish of the cover caps. Here, if you see, there is again a glossy chrome finish of the cover caps as per the theme of the furniture. Here again, there's a white color as required according to the theme of the furniture. You can have this 7 different colors in this hinge. Uh, it can be installed in living area, it can be installed in kitchen. So the application that you think, you can install there. So these are the different color options available with this hinge as per your requirements. So here, if you see, there are many people who might want this sort of a concept where they have a very less space for the opening of the shutter, and also requires a very sleek looking sort of hardware. So here, if you see, this is our pocket door fitting, where the shutter opens like a hinge shutter, and the shutter slides itself into the pocket. So this makes the shutter concealed, and you can operate the full opening, like you can have the full opening of the wardrobe, or I would say uh, the unit that has been placed here. So here you can make it as unit that you want. You can use it as wardrobe, you can use it as a tall unit in the kitchens, you can make it as a pantry unit, you can create it as a bar unit as well. There are different applications for these fittings. So here, if you see, they have used this as a bar unit using those pins that we saw earlier. On the right hand side, if you see here, the mechanism is installed as a wardrobe fitting. So there are different applications as you want to make the fitting work.
Again, here is one more version of etc. This is named as etc 2. So basically the function of this fitting is folding pocket door. If you see in this image, I think this image is clearly visible to you. So this two shutters folds itself and get themselves into the pocket. So here you can create a unit of around, I would say, 12 feet. Use the usable space that you get is 12 feet. Accordingly, you can I would say plan the inside of the fitting. Here, if you see, it's a bedroom area. It is planned as a walk-in wardrobe. In the next image, if you see, it is planned as a kitchen. Again, on the left hand side, if you see, it is planned as a mini office. I would say the work from home office sort of a thing. Here again, if you see on the right hand side, it is planned as bar unit. On the left hand side, if you see, it is planned as a wardrobe. So it's a single fitting with multiple applications. Let me show you some live videos of the same. So here is the opening of the fitting. So the same wardrobe is planned as a, like the same fitting is planned as a wardrobe, where where both of the shutters folds and completely hides themselves into the pocket. The another application that you can have for the fitting is to have a concealed kitchen, or I would say hidden kitchen. Here the mechanism is used as a is used for hiding the kitchen. Another application for same sort of fitting that you see is a walk-in wardrobe. So you can see how how the thing I would say the walk-in wardrobe is hidden beside the fitting. I have another video of a sliding wardrobe. So you can imagine how you can implement a product accordingly. Here there is a sliding wardrobe, one with a tinted glass and another shutter with a mirror. Here on the left hand side again, as I said, air hinges installed where you get just two hinges, one at the top and one at the bottom. There is no third hinge in between. If you look closely, there are no hinges in the middle. Bharat sir? Yes, Nipani. Yeah, I would say that would be done from my side. If you want to continue, we can.
Yes, now just would like to ask you a few questions. Sure, sure. Nikunj sir, can you tell us about the Salice in detail, and what are your plan for India? So talking about Salice, as we already said, that the Salice was established in 1926. It's nearly, I would say, 95 years old company, making its innovation. And in 1956, the first concealed hinge was, I would say, uh, prepared manufactured by Salice, and all the soft close hinges that you see here is again. Uh, I would say all the soft close hinges that we see here today, that is the one that Salice manufactured. So Salice was the first Okay. company to, I would say, go into soft close hinges and developing different hinges for different applications. Like one we saw, the hinge that covers itself with a cover of different colors as per the design. Salice has over, I would say, more than 600 employees who are just working for the R&D and innovation of new products. So every time, if every 1 or 2 years, Salice launches a unique product that is not available in the market. Only the one that Salice is introducing to the market. And Salice has, I would say, three manufacturing units. One solely dedicated to the manufacturing of hinges and lift-up systems. Another, the another is dedicated just to drawer runners and drawer systems. The third Okay. factory What that are your plans for India, Nikunj sir? What are your plans for India? How you are capturing the market, and what is your, what kind of clientele you are looking in India? so in India, we have started operations last year, and we are getting a pretty much good response from the market. And talking about the future plans, we are like for the time we are uh, mainly focusing on the tier one and tier two cities. And for the client range that we see, that we are looking into a niche segment, luxury segment client for majority of our products. We also have some products that for I would say economic segment client as well. ओके। और आप हमारे जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं आज, उनको Okay. क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे कि व्हाई दे शुड अंडरस्टैंड द हार्डवेयर पार्ट इन फर्नीचर? दे आर स्टडिंग इंटीरियर डिजाइनिंग। अब आप उसको उनको ये समझाइए कि आप हार्डवेयर समझना क्यों जरूरी है और हार्डवेयर क्यों इंपॉर्टेंट है इंटीरियर डिजाइनिंग में, किस तरीके से उसको पढ़ सकते हैं और किस तरीके से उसको समझ सकते हैं और क्यों जरूरी होता है। So क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को? सर पहली बात तो ये है कि लाइक हार्डवेयर जो होता है वो फर्नीचर में जान डाल देता है. So before designing, like whoever is the designer, whoever is designing the hard like furniture, उनको ये ध्यान में रखना है कि मुझे यहाँ हार्डवेयर कौन सा यूज करना है. तो डिजाइन बनाने से पहले उन्हें दिमाग में ये पहले रखना है कि मेरा कौन सा हार्डवेयर यहाँ पे लगेगा, rather than कि हम डिजाइन कर दिया उसके बाद हार्डवेयर ढूंढना, दैट इज डिफिकल्ट थिंग. वो हार्डवेयर मिलना फिर मुश्किल है. एंड समटाइम्स व्हाट ओके। हैपेंस इज हम कभी डिजाइन कर लेते हैं, कभी सोच लेते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज लगेगी, बट प्रैक्टिकलिटी में मार्केट में वो चीज अवेलेबल होती ही नहीं. ओके। सो और ऐसा कोई ऐसा हार्डवेयर है आपको ऐसा लगता है जो ऐसा हार्डवेयर है जो कॉमनली अवेलेबल है, और ऐसा कौन सा हार्डवेयर है जो कॉमनली अवेलेबल नहीं है, उसके ऊपर बहुत टेक्निकली समझना जरूरी है? ऐसे कितने टाइप के, मतलब कौन से हार्डवेयर हैं जिनको हमको टेक्निकली समझना जरूरी है, और कुछ हार्डवेयर ऐसे होंगे जिनको टेक्निकली नहीं भी समझेंगे, चलो हम लगा दिए, लाइक एन हिंजेस। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? सर जो मतलब जो कॉमन टाइप के हार्डवेयर है, लाइक आई वुड से हिंजेस हो गए, द ड्रॉवर रनर्स हो गए, लिफ्ट अप सिस्टम्स हो गए, फिर अपने कॉर्नर यूनिट्स हो गए, उसके बाद फिर अपने स्लाइडिंग सिस्टम्स हो गए. स्लाइडिंग सिस्टम में पार्टीशन फिटिंग की बात कर रहा हूँ, नॉट वाटर स्लाइडिंग. ठीक है. तो दिस आर सम ऑफ द कॉमन हार्डवेयर जहाँ पे हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा टेक्निकली जाने की जरूरत नहीं है. ओनली व्हाट वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि आपका दरवाजे का हाइट विथ वेट सारा फिटिंग के बराबर आ रहा है, देन यू आर गुड टू गो. बट देर आर सर्टन प्रोडक्ट्स जो हमें टेक्निकली बहुत समझने की जरूरत पड़ती है,
लाइक द वन वीडियो दैट वी सॉ नाउ, दैट की स्लाइडिंग फोल्डिंग वाला पॉकेट डोर है। तो दैट इज द प्रोडक्ट जहाँ पे हमें फुल्ली एकदम टेक्निकली जाना पड़ता है बिफोर स्पेसिफाइंग इट समवेयर। एंड देर आर अगेन सम ऑफ द स्लाइडिंग फिटिंग, जैसे कि इनलाइन स्लाइडिंग हो गई, तो उसके लिए भी हमें काफी टेक्निकली साउंड रहना चाहिए बिफोर स्पेसिफाइंग ओके। कि क्या स्पेस अवेलेबल है। और बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि इनलाइन स्लाइडिंग हो गई, ओवरलैपिंग स्लाइडिंग फिटिंग हो गई, तो दरवाजे के बाद हमें ऊपर में अराउंड 2 से 2.5 इंच का स्पेस चाहिए होता है। एंड समटाइम्स आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स ने डिजाइन ऐसी बना दी होती है कि वहाँ स्पेस ही नहीं होता। ये तो हो गई वार्डरोब की बात। किचन में आपको क्या लगता है कि किचन में किचन समझने के लिए और किचन को डिजाइन करते समय हार्डवेयर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? सर हार्डवेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज देखो सर, ड्रॉवर्स तो हर कोई लगाता है, कॉमन चीज है। उसके बाद जो छोटी सी जगह बच जाती है, 100 mm, 150 mm, 200 mm, वहां पे क्या लगा है, क्योंकि खाली स्पेस तो छोड़नी है नहीं, ना कस्टमर छोड़ने देगा किसी को खाली स्पेस, तो देयर वी कैन पुट सम पुल आउट यूनिट्स। काफी बार क्या होता है कि वी प्लान फॉर कॉर्नर यूनिट्स, बट दे आर अ बिट एक्सपेंसिव, कस्टमर मना कर देता है कि भाई कॉर्नर यूनिट नहीं चाहिए। इन दैट केस यू शुड हैव सम रेजोल्यूशन कि भाई कॉर्नर यूनिट की जगह हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो देर देर कम सम, देर आर सम ब्लाइंड कॉर्नर हिंजेस, ब्लाइंड कॉर्नर हिंज से एक हिंज आता है, सो वी कैन अप्लाई दोज हिंजेस एट द कॉर्नर ताकि हम कॉर्नर भी यूटिलाइज कर पाए। सो फॉर एवरीथिंग यू हैव अल्टरनेट सॉल्यूशन इन हार्डवेयर। ओके। निकुंज सर, एक और बात जो कॉमनली बाहर निकल के आती है जब बच्चे हमारे इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ऑटो कैड आ गया या 3D मैक्स आ गया, 3D सॉफ्टवेयर कुछ सीख लिया, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट सिलेक्शन सीख लिया, लाइक कलर सिलेक्शन आ गया, कर्टन सिलेक्ट कर लिए, या हमने किचन का कलर सेलेक्ट कर लिया, किचन में कोई शटर का फिनिश सेलेक्ट कर लिया। तो ये आने से ऐसा लगता है कुछ लोगों को कि हमको इंटीरियर डिजाइनिंग आ गया, हम इंटीरियर डिजाइन बन गए। लेकिन आपको क्या लगता है कि इससे आगे और क्या बच्चों को सीखना चाहिए? सर इट्स लाइक सर, कलर कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्शन, दैट्स एन वेरी इजी पार्ट, लाइक आप मैं कोई भी कर सकता है। बट वो कलर कलर कॉम्बिनेशन लगाने के पीछे जो फंक्शनिंग वाली चीजें है हार्डवेयर, वो भी सिलेक्शन एक बहुत जरूरी है। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई हमें ड्रॉवर चाहिए, हमने 30 kg का ड्रॉवर लगा दिया, बट प्रैक्टिकलिटी में कस्टमर को 60 kg का ड्रॉवर चाहिए होता है फॉर पुटिंग देयर ग्रेन ट्रॉलीज एज वेल। तो वो एक चीज समझना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई हमने बस कलर स्पेसिफाई कर दिया हमारा काम हो गया, दैट्स नॉट द थिंग, उसके पीछे का हार्डवेयर सिलेक्शन करना भी बहुत जरूरी होता ओके। ओके। एंड जब हम किचन डिजाइन करते हैं, या से मैं एक बेडरूम डिजाइन कर रहा हूँ या मैं किचन डिजाइन कर रहा हूँ, तो मेरे को दिमाग में क्या रखना चाहिए? सबसे पहले क्या चीज हमको प्लान करना चाहिए? मतलब लेआउट प्लान करना चाहिए, या हमको कलर कॉम्बिनेशन प्लान करने चाहिए, या पहले हमको हार्डवेयर सिलेक्ट करने चाहिए, या है हमको सर। पहले एक्सेसरी सिलेक्ट करनी चाहिए? तो सर सबसे सबसे पहले यू नीड टू फिगर आउट द लेआउट कि भाई मेरा बेड यहाँ पे आएगा, उसके बाद में बेड साइड टेबल यहाँ पे आएगा, वार्डरोब मेरा ये पार्ट में जाएगा। क्योंकि हम एक बेडरूम प्लान करते हैं, तब एक मैनोवरेबिलिटी भी देखनी पड़ती है कि भाई मुझे इजी एक्सेस कहाँ से पड़ेगा। उसके बाद देन यू नीड, भाई हमें पता चल गया कि हमारा बेड यहाँ पे आएगा, वार्डरोब यहाँ पे आएगा, वार्डरोब के बाद हमें ये देखना है कि हमारे पास स्पेस कितनी अवेलेबल है। वहां पे हम किस तरीके की वार्डरोब प्लान कर सकते हैं, कि हमें हिंज वाली वार्डरोब प्लान करनी है, पॉकेट डोर वाली प्लान करनी है, या फिर स्लाइडिंग प्लान करनी है। अकॉर्डिंगली फिर वार्डरोब के इंटीरियर डिजाइन करने से पहले यूनिट टू फाइनलाइज कि हमें कौन सी फिटिंग लगानी है। अगर हिंज वार्डरोब बना रहे तो उसकी इंटीरियर्स इंटरनल्स वो हिसाब से डिजाइन होंगे। अगर स्लाइडिंग वार्डरोब बनानी है तो उसके इंटरनल्स वो हिसाब से डिजाइन होंगे। अगर स्पेस की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है तो वी कैन गो फॉर स्लाइडिंग हिंज, या फिर पॉकेट डोर वार्डरोब की जगह वी कैन गो फॉर स्लाइडिंग वार्डरोब्स। एंड इंटरनल एक्सेसरीज आर समथिंग दैट इज कस्टमर्स पर्सनल टेस्ट, वी कैन जस्ट रिकमेंड कि आप ये लगा सकते हैं। सर, कुछ वार्डरोब के इंटरनल फिटिंग से एक्सेसरीज के ऊपर आप थोड़ा लाइट डाल सकते हैं? कुछ हमको दिखा सकते हैं वार्डरोब के इंटरनल एक्सेसरीज कितने टाइप के अवेलेबल हैं आप लोग के पास में, सलीचे के पास में? सर आई कैन शेयर यू, लाइक शेयर अ वीडियो एट दिस पॉइंट। सो यहाँ पे आपको सारी की सारी इंटरनल्स देखने मिल जाते हैं। लेट मी जस्ट recollect where the video is. And it is important to have accessories in kitchen and wardrobes. Is it important? डेफिनेटली सर, इम्पोर्टेंट होता ही है।
Okay. Why it is important? बिकॉज सर देखिए, खाली ड्रॉवर्स तो किसी को अच्छे नहीं लगते, वहां पे कुछ ना कुछ चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहे, वो ज्यादा अच्छी बात है। तो इंटरनल एक्सेसरीज वो चीज है जो सामान को हमारे ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प करती है। अगर मैं कहूँ किचन में मेरे ड्रॉवर में सारी चम्मच, सारी नाइफ सब बिखरे पड़े हैं, तो इट वुड बी वेरी इनकन्वीनियंट कि आपको जब भी कोई नाइफ चाहिए, चम्मच चाहिए, एनीथिंग दैट यू वांट, वो बिखरी पड़ी रहे, आपको हर बारी ढूंढना पड़ेगा। इट्स बेटर कि हम कोई इंटरनल ऑर्गेनाइजर प्लान करें, वन सेक्शन फॉर स्पून्स, अनदर फॉर बाउल्स एंड अकॉर्डिंगली। Okay. ओके, तो सर आपने एक लाइक आई वुड से जो ये वार्डरोब एक्सेसरीज का पूछा था, आई प्ले वन वीडियो so that everyone gets clarity कि हम like in Salice range what all accessories we have for internals. Please, sir. Okay, let me play the video. So here there you see there are different type of hangers for each and every purpose. These are for skirts, these hangers are for shirt. There is one more accessory which is used when you are getting ready. This is a laundry bag. So such rods can be used if the wardrobe is heighted. This is a shoe rack. These are some leather inserts for earrings. These are again So some. as an interior designer, we should know all these accessories, correct? Correct, sir. What are available in the market and what are the prices of this? So we can adjust all the budget and uh, we can tell the client कि this comes in your budget or this will not fit into your budget, correct? तो नॉट फिट इन वाली तो बात ही नहीं करनी है, जो बजट में फिट हो रहा है वही बताइए। करेक्ट 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 बराबर है। बट ये एक इंटीरियर डिजाइनर को मालूम होना जरूरी है। करेक्ट करेक्ट। दैट इज ट्रू कि अगर एक इंटीरियर डिजाइनर को ये सब मालूम नहीं है तो ही कैन नॉट डिजाइन द हाउस, ही कैन नॉट यू नो he cannot convince his client that this is a good design for you. This is the best So offering therefore for you. all the students who are yes so all the students who are listening this webinar, please understand hardware is important part while designing a space. Hardware is very important while designing the furniture. Also you should understand the what kind of accessories available in the market. So अगर आप बेड डिजाइन कर रहे हो, आप वार्डरोब डिजाइन कर रहे हो, आप किचन डिजाइन कर रहे हो, जो भी आप डिजाइन कर रहे हो, आपको हार्डवेयर के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हार्डवेयर के बारे में नहीं मालूम है, अगर आपको फिनिशेस के बारे में नहीं मालूम है, आपको स्पेस डिजाइन सिर्फ करने आ गया, तो उसको और बेटर वे में कैसे आप एनहांस कर सकते हो, आपके स्पेस को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, या मैं उल्टा कहूंगा कि ऑप्टिमम यूज कैसे अपन स्पेस का कर सकते हैं, ये समझने के लिए आपको हार्डवेयर जानना बहुत जरूरी है। निकुल सर, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपको कि जब अपन इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ हार्डवेयर अवेलेबल इन इंडिया। तो कुछ मल्टीनेशनल ब्रांड्स भी हैं, जर्मनी के भी ब्रांड्स हैं, कुछ यूरोपियन ब्रांड्स भी हैं, जैसे आप इटली से आप लोग मैन्युफैक्चरर इटली से हो। सो कुछ लोग जो है वो चाइना से भी हार्डवेयर लेकर के आते हैं, चाइनीज ब्रांड्स भी अवेलेबल है। सो हाउ यू कंपेयर चाइनीज हार्डवेयर और यूरोपियन हार्डवेयर, मींस हाउ यू कंपेयर बोथ द हार्डवेयर? सर अगर कंपैरिजन की बात करें तो द क्वालिटी, द रिफाइनमेंट, द फंक्शनैलिटी जो आपको यूरोपियन हार्डवेयर में मिलती है वो सर वहां नहीं मिल पाती है। ओके, एनी अदर डिफरेंस इफ यू कैन एलोबरेट? सर एनी अदर डिफरेंस तो सर जैसे कि चाइना ऐसा आया तो एक प्राइसिंग का डिफरेंस तो सर बहुत बड़ा आ जाता है।
And again, So why this difference is there? Why this difference is there? क्यों है ये difference? तो मतलब हमारे बच्चों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना कि यार एक कोई हिंज है जो सलीचे का है, वो समझ लीजिए 600 रुपए का है, और एक कोई चाइनीज हिंज है जो 200 रुपए का है. तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? सर डिफरेंस तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी का आ जाएगा. द अनदर थिंग इज सर्विस दैट दे प्रोवाइड एंड द सर्विस बिटवीन द एनी यूरोपियन ब्रांड दैट यू सी. दो चीजें आ जाती है. एंड आज के डेट में सर कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने से पहले सर्विस गारंटी वारंटी पहले पूछता है. बराबर है. तो ये दो मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स तो सर यही आती है. बाकी सर कॉस्ट इज ऑलवेज सेकेंडरी. देर आर कस्टमर्स जो कि प्राइस कॉन्शियस भी होते हैं, बट अगर हम आई वुड से एक लग्जरी सेगमेंट या फिर एवरेज अबव एवरेज सेगमेंट कस्टमर्स की बात करें तो प्राइस इज ऑलवेज सेकेंडरी फॉर दैट. Very true, sir. Price is always secondary. If you tell your client that this is the product which be for you can use for longer time, more cycle tested, Correct. more durable, technically it is good. You have to convince your client, you have to tell your clients कि ये technically अच्छा है. ये hinge मेरा अगर 80,000 साइकिल टेस्टेड है, कुछ मेरा hinge 1 लाख साइकिल टेस्टेड है, तो जो सस्ते ब्रांड के हैं या चाइनीज ब्रांड जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि they are barely 30 to 40,000 cycle tested, and in some cases they are not even tested. Yes, हाँ, even they are not tested. Very true, very true. They So are इसी like प्रकार से they are like हमें मार्केट में एक चीपर रेट पे प्रोडक्ट देना है, so this is the thing, टेस्ट बेस्ट किए बिना दे दिया. करेक्ट 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 करेक्ट. और अभी अगर मैं सलीचे की बात करूं सर, तो सलीचे में आपका इंडिया में अभी कितने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं, और आपका अभी मुंबई में जो आपका ठाणे में एक्सक्लूसिव जो एक्सपीरियंस सेंटर बना हुआ है, वो उसमें हम लोग आना चाहेंगे, तो क्या टाइमिंग्स हैं, कैसे हैं, थोड़ा सा उसको बता देंगे? सर यू कैन कम एनी टाइम, मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 10 to 6 हम ओपन रहते हैं, प्रोवाइडेड क्या प्रायर इंटीमेशन दे के आए, सो दैट वी कैन आल्सो हैव आवर शेड्यूल्स अकॉर्डिंगली. एंड अगर सर लाइक पैन इंडिया की बात करो तो वी हैव मोर देन 50+ डीलर्स हु आर बीइंग डायरेक्टली बाइंग फ्रॉम अस. ओके, तो क्योंकि आपको जो सुन रहे हैं बहुत सारे अलग अलग सिटीज से बच्चे आपको सुन रहे हैं, दे आर फ्रॉम पैन इंडिया, तो कुछ आप जैसे स्टेट वाइज अगर आप बता पाएंगे कि किस किस स्टेट में आपका प्रेजेंस है तो ज्यादा बेटर होगा, और किस सिटी में है? सो वी हैव अ प्रेजेंस इन दिल्ली, वी हैव अ प्रेजेंस इन चंडीगढ़, मोहाली, मुंबई, सूरत, वडोदरा, एंड आई वुड से अहमदाबाद, राजकोट. In the south region, if you see, we have a presence in Coimbatore, Bangalore, Hyderabad, Chennai. So that, like I would say, all in Kolkata also we have presence. We have presence in Raipur as well. So I would say in nearly in all the parts of India we have a presence. And in case if some city in some cities we don't have presence, the customer gets the product from the nearest city available if they really want to have a product. And what about service, sir? Sir, we have our technicians pan India, so they are always ready to serve them. जरूरत पड़ती है क्या सर्विस की? सर स्लाइडिंग के प्रोडक्ट में पड़ती है, because they are little complicated. ओके, complex to install. ओके. और सर एक और ओडिशा में कोई मतलब देयर इज अ स्टूडेंट फ्रॉम राखी जैन, शी इज फ्रॉम ओडिशा, so do you have any experience center or dealer in Odisha? No sir, not yet. Okay, so उसको कहाँ जाना होगा? रायपुर आना होगा उसको शायद, आई गेस. रायपुर और कोलकाता. ओके, सो राखी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आई गेस. निकुंज सर, एक और जो सवाल आता है कई बार जब हम स्पेस प्लानिंग करते हैं, हम जब किसी का घर डिजाइन करने जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हार्डवेयर के जो कलर्स होते हैं वो हमारे फर्नीचर से, हमारे कैबिनेटरी से, या हमारे जो भी इंटरनल्स होते हैं उससे मैच नहीं होते हैं. सो कैन वी हैव समथिंग डिफरेंट कलर्स इन सलीचे? क्योंकि बहुत सारे ब्रांड के जो हार्डवेयर देखते हैं उसमें एक ही कलर होता है, क्रोम फिनिश सारे हार्डवेयर में मिलता है, तो आपके पास में कुछ ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम डिफरेंट कलर्स के हार्डवेयर यूज कर सकें?
So sir, in hinges अगर सलीचे के hinges की बात करें, in any hinge that you see, भले soft close हो गया, push to open हो गया, wide angle हो गया, thick door hinge हो गया, so we have basic two colors. One is a titanium finish जो कि हम dark finish भी कहते हैं, okay, and ओके the another is regular color that you see, the chrome finish जो आप कह रहे हैं. एंड स्टिल अगर ये दो कलर के अलावा अगर आप hinges में कोई और कलर चाहिए तो वी हैव द लैपिस दैट वी सॉ विद डिफरेंट कवर कैप्स ऑप्शन. आपको जो कलर पसंद है वो कर सकते हैं. एंड देयर वी हैव अ वन कलर कॉल्ड मैट वाइट. तो वो कलर ऐसा है कि आप अपनी मर्जी का कलर उस पे कर सकते हैं. यू कैन स्प्रे पेंट और प्रोबेबली पीयू करवा सकते हैं उसके ऊपर. इट्स एज पर योर चॉइस. अगेन अगर मैं ड्रॉवर्स की बात करूँ तो वी हैव 4 डिफरेंट कलर्स इन ड्रॉवर्स एज वेल. The one is white color, one is dark finish, we name it titanium, another is SS finish, and the fourth is champion finish जो कि golden color है. सर लास्ट क्वेश्चन लूंगा मैं आपको पूछना चाहूंगा. बिल्कुल सर. जो ड्रॉवर सिस्टम है, बहुत सारे ब्रांड्स के ड्रॉवर सिस्टम मार्केट में अवेलेबल हैं. ओके. बहुत सारे ब्रांड्स के ड्रॉवर सिस्टम अवेलेबल हैं. और डिजाइनिंग में जब हम फर्नीचर डिजाइन करते हैं तो हमको ड्रॉवर सिस्टम को यूज करना ही होता है. सो व्हाट इज द मेन difference between Salice drawer system and other drawer system? What is the main? What would you like to highlight? Which USP of your drawer system? सर अगर मैं like Salice drawer system की बात करूँ, comparing to the existing ones in the market, Salice drawers are way easier to install. अच्छा. Yes. If I'll share one, I'll share the images of catalogs. Let me just open the catalog. तो क्या यूएसपी थोड़ा बता देंगे सर जब तक पिक्चर की. Yeah. So like if you can see this, let me just get to the page. So okay, if you are able to see this image, so this is how a Salice drawer is assembled. This left and this right side are the sides provided from like Salice. The back, bottom and front are of wooden. It's very simple. The big connectors are inserted into this profile. The small connectors are been installed at the back and the bottom panel. आपको खाली घड़ी की तरह फिर लटका देना है back and bottom panel बस. It's that simple. आपको खाली ये 3 पैनल कट साइज के काट लिए as per the size of the drawer. बड़े कनेक्टर प्रोफाइल में घुसा दिए, छोटे कनेक्टर फ्रंट और बैक पैनल में लगा दिया और घड़ी की तरह टांग दिया. So it is easy to install. It is very very easy to install. हो सकता है कि फर्स्ट टाइम कोई लगा रहा हो उसको थोड़ा समझने में दिक्कत हो, बट वंस एक बार उसको समझ में आ गया तो दे आर लाइक रेडी टू यूज दिस थिंग. ओके. तो इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपके फिटर का भी टाइम बचेगा. yes. और भविष्य में अगर आपको इसको क्लीन करना है, निकालना है, लगाना है, that is also very easy. And if you see here on the right side, this is a section of the drawer, the profile that we give along with the set. So if you see that from the top, the section is just 9 mm thick. Oh, wonderful. So these are the, I think आप सर आपको भी लाइक पता होगा. सो इससे पतला ड्रॉवर आपने भी कभी देखा नहीं होगा. These are the slimmest drawer available in the market. So Salice has thinnest drawer system available in the market. So what will happen? You will get more space inside the drawer. Yes, तो ये जो टेक्निकल बातें आज हमने अभी थोड़ी हमने. एंड सर वन मोर एड ऑन पॉइंट. सो जो भी ये प्रोफाइल्स है इसका बेस मटेरियल एल्यूमिनियम है. एंड उसके बाद जो भी फिनिश आ रही है उसके वो चढ़ी हुई है. सो बेस मेटल एल्यूमिनियम होने की वजह से कहीं भी आपको रस्टिंग के चांसेस नहीं है. वेरी गुड. सो आज guys we have learned a lot from about hardware. So this subject is wide again, and we cannot conclude this subject in 45 minutes. So please समझिए इसको. और अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए और इसको अधिक समझना है, so please log in into our website www.ttindia.com पे आप लॉग इन करिए.
हम रेगुलरली निकुंज सर को बुलाते रहते हैं, हमारे वर्कशॉप्स हम लोग करते रहते हैं, हमारे कुछ कोर्सेज हैं फर्नीचर के ऊपर, उसको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आपको स्पेस प्लानिंग करना है, आपको इंटीरियर डिजाइनिंग बनना है, तो ये आज पूरे इस 40 मिनट 45 मिनट के जो हमारा कन्वर्सेशन रहा है, तो इस कन्वर्सेशन में एक हमको समझ में आया है कि अगर हमको इंटीरियर डिजाइनर बनना है, अगर हमको स्पेस प्लानर बनना है, तो हमको हार्डवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। हार्डवेयर के बारे में हमको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास में हार्डवेयर का नॉलेज नहीं है, तो हमको स्पेस प्लानिंग में, इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत तकलीफ हो सकती है। So thank you, Nikun sir. Thank you very much for joining us today and sharing your knowledge with our student. और guys, कल शाम को हम फिर मिलेंगे 5 बजे एक नए स्पीकर के साथ में। कल हम बात करने वाले हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में स्टाइलिंग की। स्टाइलिंग क्या होता है, मैजिक ऑफ स्टाइलिंग क्या हो सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। कल हमारे साथ में मिस्टर संकेत भंसाली जी होंगे, who is renowned stylist from Pune. So thank you, Nikun sir. Thank you once again from Team IDL for joining us. Definitely हम आपको ऐसी कुछ रेगुलरली हमारे वर्कशॉप्स हम आपको बुलाते रहेंगे, हमारे स्टूडेंट्स को आप नॉलेज देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। सो गाइज, कल शाम को 5 बजे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। Keep yourself busy in learning. Thank you guys. Thank you, Nikun sir. थैंक यू सर।